Friends, today's topic is the axillary artery. This is also asked most of the time as a short note, and also viva point of view very important. Mainly, what is axillary artery, how axillary artery is divided into different parts, and the branches of parts, that is asked in the viva. MCQ में which muscle divides into three parts and branches of each part is asked as a MCQ questions. So that is very important. So first, what is axillary artery? So this is the artery which lies in the axilla or axillary region. It is a continuation of subclavian artery, that is axillary artery. Okay, so it is the main artery which supplies to the upper limb. What is its extent? It extends from outer border of first rib to lower border of teres major muscle. So that is the extension. So it extends from the outer border of the first rib to the lower border of teres major. Okay, then we have to draw the diagram. So ये रहा manubrium, body of the sternum. Okay, then यहाँ से आती है फर्स्ट रिब, मोस्ट कर्व, और यहाँ से आएगी क्लैविकल, ये वाला. ओके, फिर बिलो द क्लैविकल देयर लाइज द कोराकॉइड प्रोसेस, एंड एक्सिलरी आर्टरी begins from here. It goes downside into the axilla like this, the course of the axillary artery. Here lies somewhere humerus. This is bicipital groove, or in the bicipital groove here lies the teres major muscle. Okay, so this is coracoid process. This muscle is the teres major. This is clavicle. Okay, so this is the extension. So this is the extension of the axillary artery. So this is axillary artery, this is subclavian artery, and this is called as brachial artery below the teres major. So this is the extent of axillary artery. Now I am drawing this diagram. It will also a learning for you कि आपको डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करनी है, ये आपको समझ में आना चाहिए. सो हमने देखा एक्सिलरी आर्टरी इज व्हाट. इट इज अ आर्टरी इन द एक्सिलरी रीजन विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. इन द एक्सटेंट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. सो दिस इज द फर्स्ट रिब हियर. दिस इज द clavicle. So outer border of the first rib is the, below it is begins the axillary artery, above it is the subclavian artery, extends up to the lower border of teres major. ये teres major bicipital groove के lateral medial lip पे inserted है. So up to this lower border of teres major there is axillary artery, below it called as the brachial artery. Okay, then the course from the outer border of the first rib, it goes downward and laterally and goes till the lower border of teres major. Axillary vein lies medial to the axillary artery. Okay, clear? Now the parts of the axillary artery, how it is divided into a different part. The muscle which divides the axillary artery into three parts is the pectoralis minor muscle. So pectoralis minor, which comes from the insert on the coracoid process,
this divides the axillary artery into three parts. Above it is the first part of axilla, behind the muscle is the second part, and below muscle is the third part of the axillary artery. So pectoralis minor divides the axillary artery into three parts. Above the pectoralis minor muscle is the first part, behind the pectoralis minor muscle is the second part of axillary artery, and the below the pectoralis minor muscle is the third part of the axillary artery. Okay, so these are the three part how the axillary artery is divided. Then comes to the relations of the axillary artery. So relations are in three parts. What are the different relations of the axillary artery? So one by one we will see the relations of the axillary artery. Before that, the relations seen, we should know the orientation. अब ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, यहाँ पे आएगा ब्रैकियल प्लेक्सस. सो दीज आर द टू कॉर्ड्स विच लाइज लैटरली, lateral cord and posterior cord, and medial cord lies behind the first part of axillary artery. Then in the lower part, medial part comes to the medially, posterior part goes to posterior to the axillary artery, and lateral cord goes to the lateral to the axillary artery. फिर lateral cord से दो ब्रांचेस आएगी, एक कोरेकोब्रैकियलिस को जाएगी एंड एक वन फॉर्म्स द lateral root of median nerve. Medial root से जाए क्रॉस करेगी axillary artery को and that forms the median nerve. Then there lies the ulnar nerve which lies medial to the axillary artery. Axillary vein also lies medial to the axillary artery. Posterior cord से जो ब्रांच जाएगी पीछे, that is nothing but the radial nerve. ये ओरिएंटेशन समझ में आ गया. इन सब के ऊपर यहाँ पे एक रीजन में रहेगा पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर, यहाँ पे कौन सा मसल रहेगा? पेक्टोरलिस मेजर मसल. ओके, एंड व्हेन वी रिफ्लेक्ट द पेक्टोरलिस मेजर वी विल सी दिस पेक्टोरलिस minor, axillary artery, axillary vein and the cords of brachial plexus. Now same thing if you take the cross sections at this level. So cross section if you took at the first part, second part and third part, how this transverse or cross sections will appear we will see here. Okay, अभी सबसे सुपरफिशियली स्किन था, फिर पेक्टोरलिस मेजर था, फिर पेक्टोरलिस माइनर था, फिर ये एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन. इनके पीछे स्कैपुला है चेस्ट वॉल का, तो स्कैपुला पे सब स्कैपुलरिस मसल भी आता है. ओके, तो वो सारे पीछे मसल है. तो हम सब देखेंगे, अगर पोस्टीरियर साइड पे देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये रहा स्कैपुला. ओके, ये रहा ह्यूमरस. तो यहाँ से आता है टेरेस माइनर, ऊपर जाएगा टेरेस मेजर, लैटिसमस डॉर्सी. यहाँ से पूरा आएगा सबस्कैपुलरिस, ये पूरा जाएगा. तो सबस्कैपुलरिस यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल पे इंसर्ट, लेसर ट्यूबरकल पे इंसर्ट रहेगा, ग्रेटर ट्यूबरकल पे अदर थ्री मसल्स रहेंगे. तो ये का आया सबस्कैपुलरिस मसल और उसके नीचे आया टेरेस माइनर, ये पीछे में रहेंगे. ओके, फिर ये मेडियल बॉर्डर से चेस्ट वॉल को ये यहाँ से पूरा ये सेरेटस एंटेरियर आता है. तो यू गॉट द ओरिएंटेशन. पीछे के साइड पे सेरेटस एंटेरियर या अपर पार्ट पे, फिर ये सबस्कैपुलरिस एंड ये टेरेस माइनर है. आगे के साइड पे यहाँ पे पेक्टोरल्स मेजर था, फिर पेक्टोरल्स माइनर है, अनदर मसल है ये. ओके, अब फर्स्ट पार्ट पे अगर हम क्रॉस सेक्शन ले तो आगे क्या दिखेगा? देयर इज अ पेक्टोरलिस मेजर मसल, एक्सिलरी आर्टरी आएगी. ओके, फिर आएगी मीडियल टू इट एक्सिलरी वेन आएगी. ओके, और दोनों के बीच में यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट देयर लाइज द पोस्टीरियर साइड पे मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड, ये लैटरल साइड पे आएगा. ओके, फिर ये दोनों कॉर्ड से जो ब्रांचेस आती है ये मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व्स आती है. पीछे के साइड पे जो मसल आएगा दैट इज सेरेटस एंटीरियर, ये पेक्टोरलिस मेजर. ओके, ये फर्स्ट पार्ट पे.
अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो सेकंड पार्ट पे आगे पेक्टोरलिस मेजर आएगा, पेक्टोरलिस माइनर यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो डिवाइड करता है आर्टरी को 3 पार्ट में। पीछे जो आएगा वो सबस्कैपुलरिस आएगा अभी लोअर पार्ट पे। फिर आएगी यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी, फिर आएगी यहाँ पे एक्सिलरी वेन मीडियली, और इन सब के बीच में अभी ये कॉर्ड्स फिर से हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेम। पोस्टीरियर कॉर्ड पोस्टीरियर रहेगा, मीडियल कॉर्ड मीडियली रहेगा, लैटरल कॉर्ड लैटरल रहेगा। अगर हम थर्ड पार्ट के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो आगे आएगा पेक्टोरलिस मेजर इन द अपर पार्ट, और लोअर पार्ट ऑफ द थर्ड में आगे ओनली स्किन, सुपरफिशियल एंड द डीप फेशिया, इतना ही आएगा। ओके, फिर हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगी एक्सिलरी आर्टरी दोनों जगह पे। ओके, फिर आएगी एक्सिलरी वेन मीडियली, ये आएगी एक्सिलरी वेन मीडियली। देन वी विल गो फॉर द ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स। तो पीछे आएगी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस, रेडियल नर्व एंड एक्सिलरी नर्व। मीडियली आएगी मिडिल कॉर्ड की ब्रांचेस, ये आएगी अल्नर नर्व, मिडिल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, मिडिल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म। आगे आएगी मस्कुलो क्यूटेनस नर्व, ओके, एंड मीडियन नर्व एंटेरियरली इन द अपर पार्ट। अगर हम इसको पीछे देखेंगे तो पीछे लोअर पार्ट में रेडियल नर्व आएगी, यहाँ पे आएगी अल्नर नर्व आएगी पूरी की पूरी, मिडिल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, फोर आर्म, यहाँ पे आएगी मीडियन नर्व। ओके, सो लाइक दिस द स्ट्रक्चर्स आर अरेंज। पोस्टीरियरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी सबस्कैपुलरिस आएगा, और लोअर पार्ट में सबस्कैपुलरिस एंड टेरेस माइनर। तो ये रहा टेरेस माइनर, ये रहा सबस्कैपुलरिस, यहाँ पे भी सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर, पेक्टोरलिस मेजर। लोअर पार्ट पे कुछ नहीं आएगा। ओके, लाइक दिस रिलेशंस आर देयर। अभी हम वही एक्सप्लेन करेंगे द रिलेशंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एंटीरियर रहेगा पेक्टोरलिस मेजर एंड फेशिया कवरिंग इट। पोस्टीरियर आएगा सेरेटस एंटीरियर एंड द पोस्ट medial cord of brachial plexus, medial cord of the brachial plexus, okay, and the long thoracic nerve यहाँ पे आएगी जो सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई की। medially there is a axillary vein, ये वाली, and laterally there are the lateral cord and the posterior cord. Then the structures rotate in the second part and the relations become anteriorly pectoralis major, minor, clavipectoral fascia covering the pectoralis minor. Okay, then posteriorly there is a subscapularis muscle and the posterior cord of brachial plexus, medially axillary vein, and the medial cord of brachial plexus, laterally lateral cord of brachial plexus. In the third part, anteriorly pectoralis major in the upper part, and in the lower part, skin, superficial fascia and deep fascia of the pectoral region. Posteriorly there is a subscapularis and the branches of posterior cord, radial nerve and the axillary nerve, and posterior to that in the lower part only the radial nerve. Medially there is a axillary vein, between the axillary artery and vein there is a ulnar nerve, middle cutaneous nerve of forearm, middle cutaneous nerve of arm. In the lower part same ulnar nerve, middle cutaneous nerve of forearm and arm, and the laterally there is the median nerve and the musculocutaneous nerve. So these are the relations of the three parts of the axillary artery. तो ये डायग्राम अगर ओरिएंटेशन का ये वाला याद रखोगे तो, और ये वाला पीछे कौन से मसल है, तो आपको ये इजी रिमेम्बरिंग होगा कि ये क्रॉस सेक्शन लेने के बाद किस तरह से डायग्राम है। ओके, नाउ द ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी artery. So axillary artery is having three parts: first part, second part and the third part. So branch coming from the first part of the axillary is the superior thoracic artery. One branch from the second are the two branches: thoracoacromial artery and the lateral
thoracic artery, and branches coming from the third part are the three branches: subscapular artery and posterior circumflex humeral artery and anterior circumflex humeral artery. So first part of the axillary artery gives one branch, second part gives two branch, third part gives three branches. Now one by one all the branches. So I am again drawing the diagram so that it will be the easy. ये क्लेविकल रहा, और ये स्टर्नम रहा, यहाँ पे आती है फर्स्ट रिब, ओके, यहाँ पे आता है क्लेविकल, ये कोरोकोइड प्रोसेस, ओके। अब यहाँ से बिगिन होती है एक्सिलरी आर्टरी, ये यहाँ पे आता है ह्यूमरस, ये उसका मीडियल लिप पे यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है ये टेरेस मेजर, और ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पेक्टोरलिस माइनर एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच, ओके, फ्रॉम हियर दैट इज द सुपेरियर thoracic artery, superior thoracic artery. So superior thoracic artery, okay, it lies or it arises from the first border, okay, and it lies or it travels between the pectoralis major and minor, okay. So it lies in the upper part of the axilla, superior thoracic artery. It just subclavius के नीचे रहेगी. Then the second branch, second part, there are the two branches, thoracoacromial and lateral thoracic artery. At the upper border of the pectoralis minor, there originates thoracoacromial artery, which divides into immediately into four branches. One is the pectoral branch, which lies in the pectoral region. One branch goes to the clavicular side, one branch goes to the acromial process, and one branch goes towards the deltoid. So it gives the pectoral branch, deltoid branch, acromial branch and clavicular branch. These four branches coming from the thoracoacromial artery. It pierces the clavipectoral fascia, which lies between this clavicle and upper border of the pectoralis minor. So it pierces the clavipectoral fascia. A clavicular branch goes to the lateral end of the clavicular, or deltoid branch goes towards the deltoid, acromial branch goes towards the acromial process, and the pectoral branch goes to the downside. So that is the second artery. Third artery is the long thoracic artery, which emerges from the second bar, just below the second part of the axillary artery below the pectoralis minor. It emerges from the lower border of pectoralis minor, goes downside and supplies into the pectoral region. This artery is the major artery which supplies the mammary gland. So in case of female, this artery is quite larger, that supplies to the mammary gland, that is lateral thoracic. It supplies the muscles of the pectoral region, major, minor, also latissimus dorsi, serratus, anterior fibers, इन सबको supply करेगी. Then from the third part we have three branches: subscapular, posterior circumflex humeral and anterior circumflex humeral. Now the third part से जो lower side and goes posteriorly towards the scapular region is called as the subscapular artery. When it goes near the scapula, it passes from the upper triangular space and it gives the major branch over here in the subscapular region, that is called as the circumflex scapular artery, and that winds over the scapula and supplies to the scapula, circumflex scapular artery. Now subscapular artery is the largest branch of axillary artery that supplies to the scapular region, okay. So major its branch is the circumflex scapular, which passes through the upper triangular space, winds over the scapula and lateral border of the scapula and supplies to it, passes between the teres minor and the teres major muscle, okay. Then comes there the two wind branches laterally. One is the anterior circumflex, it goes
anterior part of the surgical neck of the humerus, and posterior circumflex goes to the posterior part of the surgical neck of the humerus. These two branches are the branches of the third part of axillary artery. Anterior circumflex humeral artery gives the ascending branch which lies in the bicipital groove. Okay, and the posterior circumflex humeral branch gives the branch which forms the anastomosis around the scapula. So these are the the branches of the three parts of the axillary artery, and this diagram you have to draw. Okay, clear about what is axillary artery, uska extent, then there are the how the axillary artery divided into three parts, branches of the each part and the relations of the each part abhi tak humne. Then last comes the applied anatomy of the axillary artery. In the applied artery, first one is the palpation of axillary artery. It is palpated between the anterior and posterior axillary fold. Now the palpation is against the head of the humerus, and there is important landmark in axilla we need to arm is the 90-degree abduction. Okay, and press your or overhead abduction also can be done. Press the fingers into the anterior and posterior axillary fold and palpate the axillary artery. This palpation is important for giving a brachial plexus block in anesthesia in the axilla, that is called as axillary block, where artery is palpated. Because ये अगर artery है, artery के around there lies the plexus. Okay, and when artery is palpated, you have to insert the needle through skin in the axilla. Around this artery, the needle is put and the drug is injected that lies around the axillary artery and the brachial plexus, and it blocks the conduction, gives the anesthesia to the distal part of the upper limb. So that is the first and most important applied part. Second, this is the major artery which supplies to the axilla, so it may get a rupture or torn in case of injury to the axilla. Okay, so that is the second important part related to the axillary artery applied. Okay, so that is what the applied part of the axillary artery is there. Okay, so this much you have to write in the axillary artery. So if you like this lecture, if you like the topic and presentation, please share my videos to your friends and colleagues. Thank you very much.